सो गाइज वेलकम बैक। जैसा हमने होमवर्क दिया था, अगर हमारा जो हायर लिमिट है n2 वो अगर लोअर वैल्यू है तो हमारा लूप रन नहीं हो रहा है। सो उस केस के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली वी विल एक्सचेंज द वैल्यूज़। सो लेट मी कमेंट दिस पार्ट एंड यहाँ पे जाने से पहले आई विल चेक इज दैट if is the decision making in Python, and if n2 is lower than n1, then simply I will exchange it, n1 n2 becomes n2 n1. so Python आपको मल्टी वैल्यूज असाइनमेंट अलाउ करता है एंड यहाँ पे these values will be exchanged automatically and rest all will be the same. Let's run this one and सेम इनपुट दे रहा हूँ मैं. फर्स्ट आई विल गिव 15 एंड देन आई विल गिव 10. Sorry, I will give 10 and look at that, now it is doing. So initially, like when you start this one is like it is giving 0. So this time if you give me lower values or anything, it will auto adjust it automatically here. And otherwise, so will it work for the base case actually? So if I give 10 and 15, this is the same. Okay, thank you. Keep learning, keep coding. Thank you.